students, an algebraic expression in which the power of a variable is a positive integer is called as a polynomial. So friends, my today's topic of discussion is algebra chapter number 3, that is polynomials. Now let us try to understand that what is a polynomial. A polynomial is nothing but an algebraic expression where the power of the variable is a positive integer. For example, this is 3x. 3x is a polynomial. The variable, the power of the variable is positive integer, positive number है 1. So this is a polynomial. For example, 7x plus 5. This is a polynomial. The power of the variable is positive integer. बराबर है? This is a polynomial. 3x square plus 6x minus 5. This is a polynomial. Is this clear? The power of the variable is positive. The power of the variable is positive. So it's a polynomial. Polynomial, polynomial, polynomial. There can be a monomial, monomial. There can be a binomial. There can be a trinomial. Trino, mono, bino, trino, mono, bino, trino. There can be a monomial, that is one term. There can be a binomial, that is two terms. There can be a trinomial, that is three terms. Is this clear? सिर्फ याद रखना है, the variable, the power of the variable has to be a positive integer. If it is not positive or if it is not an integer, that means the question is not a polynomial. Is this clear? Okay. Practice set 3.1, question number 1. Find out which are polynomials and which are not the polynomials. एक एक क्वेश्चन को आराम से स्टडी करते हैं. Talking about the first question, y plus 1 upon y. This can also be written as y raised to 1. y के ऊपर कुछ नहीं है तो सबका मालिक 1 plus y raised to, this y is in the denominator, it is having power as 1, but when it becomes a numerator, जब वो ऊपर आएगा, इंडाइसिस का रूल है बॉस, जब वो ऊपर आएगा तो उसका पावर हो जाएगा -1. क्या हो जाएगा? -1. सी द पावर. क्या देखना है, सिर्फ पॉलिनोमियल है कि नहीं में वेरिएबल के ऊपर का पावर, वेरिएबल के टकले के ऊपर का पावर देखो. प्लस रहा पॉलिनोमियल, माइनस रहा नॉट अ पॉलिनोमियल. दिस इज माइनस, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. एनी प्रॉब्स? नो प्रॉब्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 minus 5 root x. This can be written as 2 minus 5 x. This is root. That means this is square root. Indices. जिसको नहीं मालूम था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. जिसको नहीं मालूम था, x के टकले पे आएगा 1/2. x के टकले पे आएगा 1/2. x raised to 1/2. Any fraction raised to 1/2 means this denominator is called as the root and this is called as the power. Root, so this is square root, this is square root, square root. So I wrote x raised to 1/2. चलो वेरिएबल के टकले पे देखो, क्या ये नंबर है क्या? नो, इट इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, इट इज अ फ्रैक्शन. मतलब वो इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन है वो भी नहीं चलेगा, नेगेटिव नंबर नहीं चलेगा, फ्रैक्शन भी नहीं चलेगा. तो नॉट अ पॉलिनोमियल. नेक्स्ट क्वेश्चन. This can be written as x raised to 2 plus 7x raised to 1. There is nothing in the top of the variable, so कुछ नहीं रहेगा. सबका मालिक कौन है? एक है. आगे चलेगा. 9. Is this a polynomial? Yes. This is a polynomial. Yes. It is a polynomial. पूरा लिखो बॉस, मेरे समझ लिखो. आगे सॉरेगा.
आगे सोलेगा तो ऊपर देखेगा -2 दिखेगा। देखो यहाँ पे m raised to -2 है। If it is a negative number, so is it a polynomial? No, it is not a polynomial. Any props? No props. Next question is 10, 10, 10, 10, 10. Constant number है, variable नहीं है। अरे बराबर है ना? That means it is a polynomial. हमेशा याद रखना, any constant number 50, 20, 100, any constant number is a polynomial. Is it clear? Clear, clear. Question number 2 says write the coefficient of m cube. That means m cube के बाजू वाला number. Coefficient is a number which is associated with the variable. m cube के बाजू वाले नंबर को coefficient of m cube बोलेंगे। पहले क्वेश्चन में m cube के बाजू में कुछ नहीं है तो सब कम वाले एक। फर्स्ट आंसर इज 1। सेकेंड आंसर m cube के बाजू में कौन सा नंबर है? -√3। थर्ड आंसर m cube के बाजू में कौन सा नंबर है? -2/3। Any props? No props. This is फालतू। The next question is we are supposed to write the polynomials. That is first question. We are supposed to write the monomial with degree 7, binomial with degree 35, and trinomial with degree 8. Now monomial with degree 7, monomial with degree 7. That means single term लिखना है लेकिन degree 7 लिखना है। तो suppose the variable is x raised to 7. This is a monomial. तुम लोग बोलेंगे सर 5x raised to 7 करो, चलेगा। This is also monomial. कुछ भी कर सकते हैं, बट वेरिएबल की डिग्री 7 होना चाहिए। बराबर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट बाइनोमियल विद डिग्री 35। बाइनोमियल सो x raised to 35, दिस इज द फर्स्ट टर्म, प्लस कोई भी टर्म ले लो, 10 ले लो, 100 ले लो, 20 ले लो, 20x ले लो, 20x स्क्वायर ले लो, 20x क्यूब ले लो, कुछ भी ले लो। सो दिस बिकम्स अ बाइनोमियल। दो टर्म, वन टर्म, सेकंड टर्म। अरे बराबर है। नेक्स्ट इज ट्राइनोमियल विद डिग्री 8। सो x raised to 8 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10, कुछ भी ले लो। x raised to 8 होना चाहिए बस, बाकी आगे कुछ भी ले लो। आगे x raised to 8 है ना, तो x raised to 7, x raised to 6 भी चलेगा, बट दो ही टर्म होने चाहिए। 5x स्क्वायर 10x भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, ये कोई भी टर्म होने चाहिए। x raised to 8 होना चाहिए। इट इज कॉल्ड एज अ मोनोमियल, दिस इज बाइनोमियल, दिस इज ट्राइनोमियल। मोनोमियल डिग्री 7, बाइनोमियल डिग्री 35, ट्राइनोमियल डिग्री 8। ओके, इजी है। Next question says find out the degree of the polynomials. Degree of the polynomials, that means the number which is the highest number, which is the power of the variable, the highest power of the variable. For example, the first question is √5. In √5 is there a variable? कोई नंबर मतलब कोई वेरिएबल है क्या, कोई अल्फाबेट है क्या? नहीं है। √5 एक कांस्टेंट नंबर है, बराबर है ना? तो वेरिएबल नहीं है, मतलब वेरिएबल नहीं है मतलब क्या होगा? x raised to 0 होगा, x raised to 0 होगा, कुछ नहीं है तो x raised to 0 होगा, because x raised to 0, any number whose power is 0 is equal to 1. So x raised to 0 is 1. So √5 into x raised to 0, √5 into 1 will be √5. बराबर है? That means here the power of the variable, that is 0. So degree is 0. Any props? No props. Degree is 0. Next question. X raised to 0. What is the degree of the variable? X के ऊपर क्या है? 0. So I will write degree is 0. Next, third, x raised to 2. So degree is 2. √2 m raised to 10. Degree is 10. 2p, p के ऊपर कुछ नहीं है, सबका मालिक एक, so answer is 1, degree is 1. Next 7y के ऊपर 1 है,
y के ऊपर 3 है और y के ऊपर 5 है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, हाईएस्ट डिग्री कौन सा है, 5. सो डिग्री इज 5. नेक्स्ट x y z plus xy minus z. So there are three variables x, y and z. x के ऊपर 1, y के ऊपर 1, z के ऊपर 1. Now ये डिग्री जो होगी ना ये ऐड होगी, that means 1 plus 1 plus 1 total is 3. So degree is 3. Similarly here 3 7 3 7 is 10, 5 1 is 6, 1 1 is 2. That means 10 6 और 2. तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 10. So degree is 10. Any props? डिग्री मतलब समझ में आया ना, हाईएस्ट डिग्री लिखना है, हाईएस्ट डिग्री लिखना है. अलग अलग वेरिएबल रहेंगे तो ऊपर वाले को ऐड कर देना है. इजी है. ओके.